इस्लामी जमहूरी ईरान इस्लामी कल्चर हाउस मुंबई की जानिब से 34वीं बरसी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया इस्लाम जिमखाना मुंबई में, जिसमें तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक के लोगों ने शिरकत की और इमाम खुमैनी की हयात ज़िंदगी पर रोशनी डाली और अमन भाईचारगी का दिया संदेश। हिंदुस्तान डेली रिपोर्ट। We say the proof of pudding is in eating. So when my name was called out, I was stunned for a moment that I wasn't prepared for anything of this sort. But I think Imam Khomeini has left so many impressions on me, and that I don't have to recollect all of these things at one go. The one thing that stands out in my mind is the impact that he has left on the nation called Iran. Well, revolutions come and even die down, but here is a revolution that is ongoing and still on, and I'm sure this will continue until Qiyamah. What I have seen in the meanwhile, in these years, is that Iran has become stronger in so many fields and in so many ways. And one thing that stands out for me is the rate of literacy that has skyrocketed in Iran. When I compare it with our own statistics, I realize that Iran is far ahead of many of its contemporaries of its in the region. And as far as I know, the rate of literacy in Iran is almost as good as 90%, which is, I mean, something very amazing when I consider that in India we have a literacy rate of around 50%, 48% or 52%. This is one thing that stands out. The second thing that stands out is that Iran has made its presence known in world affairs. And even after being at the receiving end of the Western powers for and being boycotted at all levels, and in a situation in a world like ours, these types of steps would bring down any economy in the world. Russia is feeling the pinch of it, of the boycotts and all. But Iran has stood its stance and has survived all these boycotts, and is not only survived them, but has overcome these boycotts in so many ways. It continues to have a very delicate balance in its diplomatic contacts with everybody. And one thing that especially needs to be mentioned is that it has mended its offences with even Saudi Arabia, and that is one thing that has brought in a sea change in the affairs of this region, because Iran continues to be on the side of the resistance forces throughout the Muslim world. And even then, if you are at good terms with a country like Saudi Arabia, it means that the nuances that go into maintaining these diplomatic relations have been taken well care of, and Iran will, I think, soon will have a era of peace in this region, and that will result in more and more, what should I say, more and more peace and stability. This will result in a more and more betterment of the Iranian society and its development at all fronts, as I would like to call it. Even when I think of the fronts that Iran is progressing on, I think it has taken a huge stride in becoming self-reliant in electronics, self-reliant in its own defense requirements, and it does not depend on Western forces for its crucial requirements. One thing which I laugh at when I come across these news items is Iranian drones are being used by Russians in Ukraine. So I think you are carrying coal to Newcastle, right?
So these are the things that stand out in our mind. And when I say revolutions come and go, this is one revolution that continues. Thank you very much. में बहुत बड़ा असर डाला है, जिसने सिर्फ किसी एक कौम के लिए, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर जो है और तमाम मज़ाहिब पर और तमाम रिलीजन पर असर डाला है। मजहब की आवाज़ बुलंद की है, हक की आवाज़ बुलंद की है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। आम तौर से अगर कोई एक गांव में एक इंसान एक जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको भी अच्छा कहा जाता है। इमाम खुमैनी ने तारीख के बड़े बड़े जालिमों के सर नू किया है और उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं कि जो नज़र आ रहा है इजराइल किस तरह से तबाह हो रहा है। एक ज़माने में जो ग्रेटर इजराइल और नील से फरात का ख्वाब देख रहा था और पूरे इस्लाम को जो अपनी नज़र में रखना चाहता था, आज वो अपनी दीवारें उठा रहा है और जो है अपने आप को बचाना चाह रहा, फरार कर रहा है। तो ये सारे अजीम कारनामे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के हैं और वो कारनामे हमेशा बाकी रहेंगे और जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे इसके असरात भी और ज़्यादा बढ़ते चलेंगे। खुसूसी तौर पे आज के इस प्रोग्राम में देखा गया है कि बैनुल मज़ाहिब के यहाँ पर जिम्मेदारान मौजूद थे, मुख्तलिफ मसालिक के लोग मौजूद थे, तो इनको यकजा करने का कुछ खास पैगाम आप देना चाहते थे? अब आप बोल दीजिए। देखिए हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर तरह के मजहब व मिल्लत के लोग मिलजुल के रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। कुछ लोग हैं जो नफरत की बातें करते हैं, लेकिन हमारी अक्सरियत अभी भी जो है वो इंसानों के दरमियान में मोहब्बत के साथ रहती है। और यहाँ पे कई मजहब के लोग आए थे, मुख्तलिफ फ़िरक़े और गिरोह के लोग आए हुए थे और सब जो है इमाम खुमैनी के लिए एहतराम के कायल थे, क्योंकि सबकी नज़र है कि इस इंसान के उस अमल पर। तो इस तरह के काम मुसलसल इस तरह होते रहने चाहिए ताकि इसका एक फ़ायदा ये कि जो लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं उनसे बचा जाए और लोग जो है आपस में मिलना जुलना जारी रखें और साथ साथ जो है उनके अफकार, उनकी सोच, उनकी फ़िक्रें एक दूसरे से नजदीक कर सके। कौमी इत्तेहाद का पैगाम देने की भी कोशिश की गई। बिल्कुल, जिस तरह खुद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तेहाद का पैगाम दिया कि मजलूमों को एक होना चाहिए, मुसलमानों को एक होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ भी अमली तौर पर जो है जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया वहाँ पर तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़े के लोगों को बुलाया गया ताकि सब लोग मिल के जो है बैठें, बात करें। जी। Memorial of the founder of the Islamic Republic of Iran, Imam Khamenei, may his soul rest in peace. We gathered here. We organized this event, trying to get associated and to get to know with the scholarly opinions of the various religious scholars. वहाँ पर तुर्की में दो पार्टियाँ थी, एक जो है दीन के नाम पर आ रहे थे, अगरचे वो दीन कितना खालिस है वो अलग मसला है, लेकिन बहरहाल अपोजिट में वो लोग थे जो दीन की मुखालफत करने वाले थे। और तो जीते हैं, अच्छी बात है, अच्छे असरात होंगे, स्टेबल होगी, थोड़ा हुकूमत आगे बढ़ेगी। लेकिन जो अभी आपका वो सवाल था, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इमाम खुमैनी की कमी तो कभी नहीं पूरी हो सकती। इमाम खुमैनी जैसा इंसान तारीख़ में नहीं पैदा होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन ने बहुत कोशिश की मुसलमान मुल्कों को लड़ाया जाए, सऊदी को, ईरान को लड़ाया जाए, यमन में मुश्किलात पैदा की और जगहों पे, लेकिन उनके नायब बरहक इमाम खामनेई रहमतुल्लाह अलैह हफ़ज़हुल्लाह रहबर इनक़लाब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अच्छे तरीके से आकर कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के दरमियान में, मुल्कों के दरमियान में जो इख्तलाफात उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि दूसरी तरफ से कोशिश भी बहुत ज़्यादा है, दुश्मन की तरफ से कोशिश भी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर वक्त लगता है, लेकिन इंशाअल्लाह आखिर में अंजाम बेहतर होगा। ये पूरा इस्लामी इनकलाब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेजी, जो 44 साल की कोशिश चल रही है और भरपूर कोशिश चल रही है। एक दो मुल्क की नहीं, कई सारे मुल्क बड़ी बड़ी ताकतें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बुनियादें जो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम की है और जो इमाम के शागिर्द और सबसे करीबी और अजीम शागिर्द रहबर इनकलाब जिन बुनियादों के साथ, तरबियत के साथ लोगों के लिए चल रहे हैं, दूसरे मुल्कों के जो ख्याल रख रहे हैं, जो लोग जंग करना चाहते हैं उनके साथ गुफ्तगू करके उनको नॉर्मलाइज करना मसाइल को, और जो भी हालात देख रहे हैं जिस तरह करीब हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इन सब के असरात बेहतर होंगे। और बहरहाल कुरान का फैसला है कि हक आता है तो बातिल चला जाता है, हक आता रहेगा और बातिल जाता रहेगा।